HTML इसमें IT कम्युनिकेशन स्किल में 25 का चैप्टर है पेजेस बिकॉज़ 3 घंटा लगेगा which topic we are studying No, but which topic we are studying? Chapters. Page number 8. We all are waiting for you all. Come fast. Total is how many? और 3 बाकी है ना चार हाँ विमान आएगा वो लेट आता है वो खत्म करने आती है ना चालू कर मैं आपसे जाके 20 मिनट अच्छा ओके चलो till then we will revise for 5 minutes and then we will go for the next part okay डाल्टन वगैरह तो रिवाइज करने का जरूरत नहीं है you all are aware of that and in previous topic में atom and molecule again we are going to study then Thomson model we have completed what is that model all about Thomson J.J. Thomson what watermelon very good pudding plum pudding model watermelon model so in that part guys red part of that watermelon it is compared with red portion it is compared with positive particles cell mat karo biology we are not studying and negative part seeds are compared with negative particles okay so we have completed J.J. Thomson model then which was the next Rutherford atomic model guys enough now बस हो गया now come out of that world come in this world हाँ चलो बाद में क्या है तुम्हारा देखो what was there in Rutherford atomic model golden sheet तुम देखो gold वाला don't take support of that book खाली picture देख दो थोड़ा it will give you some kind of hint हाँ gold sheet and what he has thin very thin folded multiple it was not folded thin foil was taken only it was about thin gold foil material क्या था thin gold foil then the light rays कौन सा rays UV it was not UV rays which rays were used positively charged कौन सा था वो positively charged particles known as alpha particles having double the mass of the helium so mass of helium is 2 alpha particles are double matlab 4 right then and one more thing was there along with that to check or to see whether the particles are particles are moving in which direction come fast एक shield type some material was there what was that material gold foil no gold shield foil हो गया gold shield foil हो गया alpha particles हो गया और कुछ था photovoltaic cell photovoltaic plate was used overall what was that experiment in short tell me what was that experiment चलो anyhow we are just revising हम लोग वेट करें आ जाए in short what was that experiment बेटा ये वाला पार्ट मत देखो अब वो जो सर्कल से ना पिछले पेज पे ये वाला पार्ट फिर याद आ जाएगा don't read it just look at that picture क्या था एक्सपेरिमेंट वो Rutherford took a gold sheet and put it in like a photovoltaic cell photoplate plate and then he had a radioactive component I guess helium no अभी हमने कौन सा बोला था रेडियोएक्टिव रेस gamma rays
सत्यानाश मार के डालेंगे एक्सपेरिमेंट का gamma rays use करेंगे. They are most penetrating rays, huh? They are not used for this normal function. You remember ना, gamma rays सबसे dangerous rays लेता है, so they are not used for the normal experimental thing. जो तो high tech वाला कोई चीज रहेगा ना, to destroy particular cell, in that case gamma rays are used. Otherwise they are not used. Okay. Then आगे पूरा करो experiment. We have to go for the next point now. Then सब यही बोलेगी, आप कुछ नहीं बोलोगे लास्ट बेंच पे. आगे highly what is that, positively charged alpha particle, they were bombarded on the thin gold foil. What happens as a result of bombardment? Look at the picture. Starting उनका वो particular sequence I have given ना, many pass through, some deflected, some deflected by some angle maybe more or less, right now, and few were deflected back. Okay, this was his observation. Then depending on this observation he made conclusion ना. Conclusion क्या था उन्होंने दिया था? Conclusion, why they are passed, why they are deflected, why they are is mostly empty. And this is for passing, right? Now this is for passing. Then positively charged particles acquire less SND. SND. Positively charged particles are mostly contained in the center, है ना? पर ऐसे ही बोलना था ना आपको, खाली words नहीं मिल रहे थे. वो नीचे दिया है उसके एटॉमिक मॉडल में दिया है. हाँ, ये कंक्लूजन हम लोग बता रहे हैं. और एक चीज है ना उसके अंदर, फाइनली कैरेक्टराइज्ड है, दिस विल बी द एटॉमिक मॉडल. एंड फॉर रिबाउंसिंग बैक, गोइंग बैक, दो पॉइंट हो गए ना, एम्प्टी स्पेस, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर, है ना, एंड देन रिबाउंसिंग बैक, उसका रीजन क्या था? Deflected by positive charge, repelled by the positive charge. Okay, and depending on this conclusion he made he gave the model, atomic model. हाँ तो मॉडल तो दिया है, atomic model. In that model the first point was, which was the first point? The positively charged particles are in the center known as the nucleus. This positively charged part, it is known as nucleus. Then nucleus. Electrons revolve around the nucleus. Electron revolves around the nucleus. Mass of the atom is concentrated on the inside part. Inside that nucleus. Inside the atom, which is nothing but nucleus, right? Electrons are moving around the nucleus, and और भी कुछ दिया है ना उसके साथ में, certain energy is associated. One point is there, read करो वहाँ पे, energy वाला. It is moving around the nucleus in a specific path, orbit, this well-defined orbit. And और कुछ दिया है, size of the nucleus is very small compared to the atom. Compared to atom, so that I have already represented. Okay, this was his module for atomic structure. Based on this, next part was a drawback part. किया था शायद last time we have done drawbacks also. So depending on this or looking at this picture, what are the drawbacks of Rutherford atomic model? हाँ थोड़ा आप लोग भी हाथ ऐसा ऊपर करो, थक गए रहेंगे ना पूरे दिन से. ये हम लोग जब मैंने for longer time to keep our hand like this, कोई भी body part को ऐसा रखते हो ना, तो we have joined ना सब यहाँ पे. ये तुम्हारे खाली तुमको ऐसा to take you out of the world. ये वाला जितना भी जॉइंट रहता है ना, इन दिस जॉइंट CO2 is get deposited. ओके, तो उसको वो जो टुक 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 वाला तुम्हारा जो आवाज आता है ना, तो CO2 का जो बबल होता है, that bubble it is broken. So is it good to break that bubble? अभी वो tradition wise some people are saying it is not good to do like this, many are doing like this. आपको तो पता है ना लोग क्या बलाई निकालते भी ऐसा करते, तो वो भी मना है, नहीं करना चाहिए. But I think scientifically it should be done. मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ सकते हैं.
हाँ मैंने भी सुना और तो बैठ के अभी सपोज फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग नहीं सी लाइक दिस फॉर आई एम फॉर द ड्यूटी एग्जामिनेशन ड्यूटी पे मैं हूँ, हाँ मेरे सामने 25 स्टूडेंट्स बैठे हैं, दे आर राइटिंग सीरियसली, दे आर राइटिंग पेपर, और मैं किसी को एक बार भी स्माइल ना दूं, मैं एक बार भी मुंह ना खोलूं, मैं किसी से पानी भी मत मांगू, तो सोचो मेरे बॉडी में CO2 कितना सारा हो जाएगा। कुछ नहीं बोला तो ऐसा तो बोलना पड़ता है ना, पेपर दे दो, साइन करना है, राइट ना। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये भी कॉस्ट होती है, हम ज्यादा कहाँ कर रहे हैं, मैंने कहा ज्यादा कर रहे, हार्ड 1 घंटे में एक बार करेंगे तो इतना क्या ही होने वाला है, अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क, मैं सारा काम मेंटली करना है, वो तो बात अलग है, मैं सुबह से उठ के काम करती हूँ वो चलो समझ में आया ना, इन दैट गैप देयर इज CO2, हमारे बॉडी में भी CO2 का प्रोपोर्शन थोड़ा कम ही रहेगा तो अच्छा है, उसके लिए हमको थोड़ा मुंह खोलना चाहिए, थोड़ा बोलना, थोड़ा, हाँ, not beyond the limit. Now look at that picture and tell me what will be the drawbacks. हाँ देखो, very good, I like this. हाँ drawbacks. Revolution is not expected to be stable. Okay, so And so the charged particles will radiate energy, which will finally like fall on the nucleus. Right? And one more connecting point I have given you, ना? याद है आपको? ये सारा पॉइंट करेक्ट है, लेकिन इन बिटवीन आई हैव एक्सप्लेन समथिंग, थोड़ा सा ही वो चीज था, क्या था वो, डू यू रिमेंबर? से रिलेटेड बोल रहे हो आप? इससे ही रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑर्बिट, शेप ऑफ द ऑर्बिट वाज एक्सेलरेशन, दैट पॉइंट इज देयर, बट उतना आप डीपली मत जाना, इट इज ओनली द स्पीड, ओके, जैसा एनर्जी कम हो जाएगा उसका स्पीड भी कम होते जाएगा, ये वाला पॉइंट। If an atom is stable, then matter won't exist. नहीं देख, तूने कुछ तो खा लिया यहाँ से, ओलंपिक का पढ़ाई ऐसा करके नहीं चलने वाला, एटम इज स्टेबल देन, if atom is unstable, then matter won't exist. So how that atom will be unstable? For that one point I have given you. Actually picture बना के मैंने बताया, हाँ वेरी गुड, वो घूमते घूमते थक जाएगा, कौन घूमते घूमते, इलेक्ट्रॉन, ओके, वो it is moving, right? It is continuously moving, so energy it will go down. वो मैंने मेरा ही शायद एग्जांपल लेके बताया था, मुझे याद है अभी तक, तो एनर्जी उसका कम हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली whatever that circle orbit I have made ना, size of that circle it will go on decreasing, finally it will come very close to the nucleus. Nucleus, as we have already said, it is positively charged, electron it is negatively charged, तो उसने ऐसा नहीं बोला है कि there is a attraction, what we are saying positive negative, there is an attraction, but what did Rutherford give? He said that electron will fall on the nucleus and that whole atom will collapse and matter will not exist. ऐसा ही दिया है ना, समझ में आया डिफरेंट स्टेटमेंट का। अभी हम बोल रहे हैं देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, इन अदर वर्ड्स इन आवर टुडेस नॉलेज वी कैन से हाँ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली, न्यूक्लियस है पॉजिटिव, तो वहां पे अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों साथ में आ जाएंगे, बट रुदरफोर्ड एट दैट टाइम व्हाट ही हैज गिवन, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, दैट energy will decrease and finally at one moment electron will fall on the nucleus, whole atom will collapse, and in this case and hereafter there will be no existence of matter, and which is at all not possible. है possible? अगर वैसे सब आके गिर के धमक के उधर से सत्यानाश होता था तो हम आज यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, राइट ना, तो ये उन्होंने दिया था, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अभी इसके आगे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट इज बोर एंड ही, अभी यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द थर्ड एटॉमिक मॉडल गिवन बाय नील बोर्स, और वी कैन जस्ट कॉल बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये पार्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एटॉमिक मॉडल। Now here you will not have anything of eating, ऐसा वाला energy कुछ नहीं। Now we will come out of all this thing, ना watermelon जाएंगे, ना plum pudding जाएंगे, ना वो वाला पार्ट देखेंगे चक्कर आके गिर जाता है, उसको सबको भूल जाओ। Now one important point which Rutherford has given, that electron is moving in a specific path, right? It is having some energy. ये जो इन्होंने दिया था, by taking that point only, he has given his model that when electron is moving anywhere, that electron will not move randomly,
It has fixed path. It has fixed path. And when we are saying it has fixed path, this means it has fixed energy. बराबर है ना? For example, let us go back again. Here I have said, मैंने नहीं बोला, हाँ ऐसे वो रुदरफोर्ड ने बोला, कौन थे वो? रुदरफोर्ड ने बोला है, this electron energy it will go on decreasing, finally it will come closer to the nucleus at the end, it will fall, right? Orbit में move हो रहा है, it has energy. Two things he has given. This 2 point, Bohr's ने he has taken these 2 points again. He said that electrons are moving in a specific path. This path it is known as orbit. These orbits are around the nucleus of an atom. And when these electrons are moving, for example, if electron is moving here in this particular after nucleus, this is the first orbit where electron is moving, and this orbit it is having some specific energy. Okay, if that electron is present here, तो उतना एनर्जी उसके पास में रहेगा, इसीलिए वो सेकंड वाले ऑर्बिट में है, थर्ड वाले में है, तो उतना एनर्जी उसके पास में. Randomly this electron cannot move from here to here, they cannot jump from one level to another level. This means in particular sequence, in particular level they are moving. इतना याद रहेगा. हमको क्या करने का? Just we have to take drawbacks of Rutherford, apply on the Bohr's theory. अब one by one you note it down. मैं आपको आगे का लिखूँ. First write down name Bohr's model of atom. Your first point is only certain special orbit. You know now what is meaning of orbit? Yes, ma'am. क्या? The path on which electrons keep moving. हाँ. This path is not always circular. In 9th standard, it is given circular or spherical. Okay, but once you will go in class 11th now, this is again 5 types, 5 different types are there. So circular word mat apply करो, just don't apply circular. It is moving in specific. Understood ना? Yes. अगर आपको बराबर वही चीज उठा के आगे जाना है ना, तो circular से word मत apply करना. यहाँ पे अगर आपने book में दिया है, then we will see only certain. बेटा you don't have module. Write down today's state topic name. Only certain special orbit known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. कर लो ये तीनों पॉइंट लिख दो. फर्स्ट वाला मैंने डिक्टेट किया, सेकंड थर्ड पॉइंट पूरा कर लो. अभी मैं ये आई एम रिमूविंग दिस. यू कंप्लीट दैट 2 पॉइंट्स, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स अच्छे से लिखो. हाँ I don't have. वेरी गुड. डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल यू कैन. Reliance. अच्छा, last time I was there for paper correction duty. ये वाला खोपर खेराने वाला ना. Reliance. प्रतिभा नहीं. कौन है आपके केमिस्ट्री के टीचर? नीलम. फिर 2 टीचर्स आए थे for 11th and 12th. एक वो हाइटेड वाली, एक थोड़ा हाइट कम. चलो you complete all this point. मैं इसके नहीं, वो तो वैसे भी कौन से क्लास में? यू आर इन प्रतीक्षा. यू आर इन 9th ना. 10th 12th का इवैल्यूएशन ड्यूटी में मैं थी वहाँ पे इन मार्च. सो नीलम मैम इज टेकिंग और प्रतीक्षा मैम इज प्रतीक्षा. She is not keeping it, so a physics teacher is taking. प्रतीक्षा मैम इज नॉट वेल. Yes, ma'am. हेल्थ इशू है कुछ. ओके डन. Which is the second point? While revolving in discrete orbits, the electrons do not. ये फर्स्ट वाला तो मैंने वही डिस्क्रीट ऑर्बिट वाला हो गया ना. While revolving in such orbits, the electrons do not radiate. अच्छा, do not radiate. According to Rutherford, electrons were radiating energy. हो गया. उन्होंने जो ड्रॉबैक बताया, इन्होंने क्या किया, उसको ओवरकम किया by saying that electron is not radiating energy. In case if electrons are radiating energy, then this first point is correct. समझ में आया ना what I want to ask you? अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी विल गो डाउन. This existence of orbital, it will not at all possible. जो मैंने आपको बताया ना, ऐसा first, second, third, it is not at all possible. So according to Bohr's,
Electrons are not giving any type of energy, they are remaining as it is. जितना energy उनके पास सुबह में है, बड़े अच्छे electrons है, without wasting any energy, they are just moving. Okay. Then third point. This is what we have to learn in Bohr's atomic model. Third point. These orbits are known as energy level. These orbits are known as energy level. यही मैंने आपको बताया. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो this particular orbit has some energy. बताया था ना. So this orbit हो गया लिख के आपका. You all have written third point. एक अच्छा सा पिक्चर बनाना है हमको, हाँ. So you all also start. Make nucleus in the center. Small dot. Okay. Then around the nucleus make one circle, two circle, three circle. Then here one circle, circle number first from nucleus. Circle number first from nucleus, it is K. Then next one is L. Then M. And the fourth one it is N. अच्छा वाला सर्कल बना ना. My drawing is very good, I know that. अच्छा बनाओ. Try to make proper circles. After nucleus, the first circle it is K. Don't change the sequence. Only 4 letters you have to remember. 4 alphabets you have to remember. After nucleus K, L, M, N. This all are in capital. This all are capital alphabets. वहाँ पे confuse मत होना. Here I have make one small table writing K, L, M, N. N, what is N? I will tell you later on. And number 1, it is next from the nucleus. Number 1, 2, 3, and 4. This sequence I have followed. Now N here it is a energy level. Energy level. So from the nucleus it is first one, energy level 1. Understood? From nucleus second 2, third 3, fourth 4. ये sequence you have to follow. और लास्ट वाला एक कॉलम वैसे ही रखो, वो हमको पूरा करना है. Done? उसको भी लाइन बना के रख दो. At the end you will write here fill the value of 2n square. ये बात में करेंगे हम 2n square. This particular thing you understood? What he has done, he has just took the drawbacks from Rutherford atomic model, giving electron how they are moving. Rutherford said they radiate energy. Bohr said they are not radiating energy. Bohr said they are moving in the particular orbit. Yes, he said in the particular orbit, but that depends on the energy level. So here energy levels are given. Okay. अब यहाँ से ध्यान में रखो. Hereafter, whenever you are studying chemistry, okay, this pattern it is a fixed pattern. You go in any of the class, this pattern will not change. कुछ भी पढ़ो आप लोग, ये pattern change नहीं होने वाला है. Nucleus K L M N.
K, L, M, N are what? They are energy level. And in this energy level, other term we have used orbit. बराबर है ना? According to Rutherford, we have used the term orbit, and this orbit electrons are moving. Ma'am, like, is this like that at first K only 2 can move and in ये वाला value, this formula is for that purpose. Okay? learn this in 7 I guess. अच्छा तो already you have done this. अच्छा चलो वो वाला किया नहीं किया because है ना since I have joined here ना ये हो गया वो नहीं हो गया ये ऐसा हो गया वो वैसा हो गया हाइट तो तब हो गया जब इसमें का उसमें पढ़ाया उसमें का इसमें पढ़ाया वो तो concept मुझे समझ में ही नहीं आया. Okay, anyways, forget that all. Nucleus in the center. After that, many energy levels are there. The energy level which is next from the nucleus. Next, एकदम से पहला वाला जो आता है K, L, M, N. According to this sequence, I have numbered. अभी इसका representation it is N. Now N, how to calculate? What is that N? It is for 11th standard. For time being, you just remember energy level 1, 2, 3, 4. Okay, and the next part, last column, it is 2n square.